Hello, good morning to all of you. Now, this is the fourth part of first chapter of 11 class NCRT. The name of the chapter is sets. Okay, now in this last part, we will discuss about some important results. And I think you have to remember these results. Okay, so that you can solve the examples of your NCRT and questions easily. Alright, so let's start. Our first result is number of elements in A union B is equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. First thing is आपको तीन sets given है A, B and C which are finite sets and U be the universal sets. Alright, so A union B में कितने elements होंगे? That will be equals to number of elements of A union B is equals to number of elements in A set plus number of elements in set B minus number of elements in set A intersection B. We can show that easily, like this is your set A and this is your set B. Okay, so we have to find out number of A union B. We know that A union B is equals to, this part is A minus B, union of this part is A intersection B, union of this part is B minus A. Alright, so number of A union B will be equals to number of elements in A minus B set plus number of elements in A intersection B set plus number of elements in B minus A set. Okay. Now, number of elements in A minus B set मतलब इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? That part can be written as number of A. Okay, this is set A minus number of elements in A intersection B. यानी अगर इस पूरे पार्ट में से अगर आप ये पार्ट निकाल दो तो obviously ये पार्ट बचेगा. That means we can say number of A minus B is equals to number of A minus number of A intersection B. Simple. So this can be written as number of A minus number of A intersection B plus this is as it is plus number of B minus A. That means this part can be written as number of B minus number of A intersection B. Alright, so number of B minus number of A intersection B. This part cancel out this part, so we can say number of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. And this is the first important result. Alright, our next result is number of A union B is equals to number of A plus number of B. Means this part is equals to this part only when A and B are disjoint sets. Means first set अगर आपका ये है और दूसरा set आपका ये है, this is your A, this is your B, then we can say in this case number of A union B is equals to number of A, means इसके elements plus इसके elements के equal होगा n of A union B, because A and B are disjoint set. So for disjoint sets we know A intersection B is equals to 5 because इन दोनों में कोई भी common element नहीं है. That means number of A intersection B is equals to 0. So this part of the first identity is this part is 0. If this part is 0, that is number of A and B is equals to n of A plus n of B. Simple. Now we will see just the properties or results because इनको drive करने में बहुत time लग जाएगा. Alright. So our third part is number of A minus B plus number of A intersection B is equals to n of A.
we will see by the diagram. If this is A, this is B, this is A intersection B. n of A means number of elements in set A को हम क्या लिख सकते हैं, number of elements in A minus B plus number of elements in A intersection B. यही तो लिखा है यहाँ पर. Okay, so for by this equation we can say also one more thing, number of A in minus B is equals to n of A minus n of A intersection B. Okay, so these are important results and we will use these results in 8th, 9th and 10th results जो कि अभी आ गए हैं अपने पास. Okay, next fourth result is De Morgan's law. A union B complement is equals to A complement intersection B complement, and second is A intersection B complement is equal to A complement union B complement. इन दोनों थ्योरम्स को आप प्रूफ कर सकते हैं बाय द वेन डायग्राम. ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ A union A complement union B complements मीन्स A complement union B complement एक सेट है. इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, डे मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सेट में उतने एलिमेंट्स होंगे जितने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में होंगे. ओके, बिकॉज दीज आर इक्वल बाय डे मॉर्गन्स लॉ. अब A intersection B complement, we know A complement is equals to U minus A. So number of A complement is equals to n of U minus n of A. Simple. So n of A complement is equals to n of U minus n of A by this rule, where A is equals to A intersection B. Okay, so by this property we can say n of A intersection B complement is equals to n of U minus n of A intersection B. Okay, next result is n of A complement intersection B complement, A complement intersection B complement is equals to A union B complement. So number of A union B complement is equals to वही same property के through number of elements in universal set minus n of A union B. Okay, next seventh result is n of A union B union C. n of A union B union C मतलब if we have this is A, this is B and C set, तो A union B union C का मतलब होता है कम से कम एक सेट में ज़रूर बिलोंग करे. अगर कम से कम एक सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा A यूनियन B यूनियन C. ओके, कम से कम एक सेट का मतलब है कम से कम एक सेट में बिलोंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों भी हो सकते हैं वो एलिमेंट्स. ओके, सो नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C, where n of A intersection B intersection C का मतलब है वो एलिमेंट्स जो तीनों में बिलोंग करते हैं, दैट इज दिस पार्ट. ये पार्ट A सेट में बिलोंग करता है, B पार्ट में भी, B सेट में भी और C सेट में भी बिलोंग करता है. A इंटरसेक्शन B वाला कौन सा पार्ट होगा, A इंटरसेक्शन B का पार्ट होगा ये पूरा. ओके, नेक्स्ट इज 8th नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सिमेट्रिक डिफरेंस B. ओके, A del B. इसे हम ये भी कह सकते हैं दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ A और B, या तो A में बिलोंग करे कम से कम या फिर B में बिलोंग करे. ठीक है, so A difference B, A symmetric difference B can be written as by the definition जो कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी. A difference B is equals to क्या होता है, A minus B union B minus A. So number of this elements is number of this element. Okay, so number of A minus B union B minus A. A minus B, this is our A part, this is our B part. A minus B ये part होता है, B minus A ये part होता है. Obviously we can see that these two sets are disjoint sets. So
by the second property, n of A union B is equals to n of A plus n of B. So A union B is equals to n of A minus B plus n of B minus A. Now n of A minus B by the third property, you can see n of A minus B is equals to n of A minus n of A intersection B. So this is n of A minus n of A intersection B plus n of B minus A can be written as n of B minus n of A intersection B. So overall we can say n of A plus n of B minus this and this minus 2n of A intersection B. So simply number of elements in A symmetric difference B, that is which belongs to exactly one of A or set B, is equals to number of elements in set A plus number of elements in set B minus 2 into number of elements in A intersection B. Okay, ninth property is number of elements in exactly two sets. Fix दो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे. दिस इज योर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. तो इस पार्ट में और इस पार्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे. ओके, वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर दिस exact number of elements in exactly two offsets A, B, C. Number of A intersection B plus n of B intersection C plus n of A intersection C minus 3 multiplied by n of A intersection B intersection C. Okay, and last is number of elements in exactly one of the sets A, B and C. Exactly one set के टोटल एलिमेंट्स, चाहे वो ए के अंदर हो, चाहे बी में है, चाहे सी के अंदर की बात करें. ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. This is the number of elements in exactly one of the sets A, B and C. लास्ट के दोनों क्वेश्चंस और A यूनियन B यूनियन C, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे NCERTs में. लाइक कुछ सम स्टूडेंट्स आर देयर इन a class and they like cricket, football and basketball. ओके, जिनमें से कुछ हैं जो फुटबॉल और ये दोनों को पसंद करते होंगे, कुछ ही दोनों को पसंद करते होंगे. तो क्वेश्चन अगर ऐसा होता है कि तीनों गेम्स को कोई पसंद करता हो तो वो होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, तीनों गेम्स को पसंद करने वाले, तीनों में से कम एक को पसंद करने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे. नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली दो गेम्स को पसंद करते हो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला. ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कम एग्जैक्टली एक गेम को पसंद करते हो, ओके, चाहे वो ए के लिए, चाहे बी के लिए, चाहे सी के लिए, सो उसके लिए यूज़ करेंगे आप ये फॉर्मूला. ऑलराइट, सो दिस इज अ important results on sets. Okay, thank you very much and share this video.